Hello everyone, have a nice day. Normally the way we wash our hands, is it right? Let's see in this video. What are the parts that are left when washing hands and where microorganisms remain? In today's video, we will learn hand washing techniques and how to take care of our hands will receive. You can see in this video that when we wash our hands, we leave the area and finger link area in the back side of our hands, which is prone to infection. So we should use hand washing technique to wash our hands. The missing part shown in the picture clears the microorganism and we can avoid infection. What is hand washing technique? Step First of all, soak both your hands with hot or cold tap water and take one liquid or soap. Step second, rubbing both the palms together by applying soap or cleaner and rubbing the area between the fingers. And also rub the back of the palm in the fingers. Step third, scrubbing the nails of the fingers and cleaning them. Cleaning the nails of the fingers of the left hand and similarly cleansing the nails of the right hand. Step 4. Rub the thumb of the left hand and with the right hand and the thumb of the right hand with the left hand. Step 5. Rubbing the waist of the left hand by rotating it with the right hand and rubbing the waist of the right hand with the left hand and washing with water. Step 6. Wipe the palm and back side of both hands with a dry towel. In this way we can take care of our palms by completing 6 steps of hand washing technique in 60 seconds. Thanks for watching this video, and now you learn in Hindi. We will discuss about it in Hindi. प्रिय बच्चों, जनरली हम जिस प्रकार से हाथ धोते हैं, क्या वह सही है? आइए इस वीडियो में देखते हैं कि हाथ धोने पर कौन से भाग होते हैं जो छूट जाते हैं और जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम हैंड वॉशिंग टेक्निक सीखेंगे और अपने हाथों को किस तरह से केयर कर सकते हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब हम हाथ धोते हैं वह हमारे हाथों के बैक साइड में हम एरिया और फिंगर के लिंक एरिया छूट जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसलिए हमें हाथ धोने के लिए हैंड वॉशिंग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे चित्र में दिखाए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्लियर हो जाते हैं और हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या है? स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को नल के गर्म या ठंडे पानी में भीगने दें और कोई एक लिक्विड या साबुन लें। स्टेप सेकंड, साबुन या क्लीनर लगाकर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना एवं उंगलियों के बीच में के भाग को रगड़ना एवं हथेली के पीछे उंगलियों में से भी रगड़ना। स्टेप थर्ड, उंगलियों के नाखूनों को रगड़कर साफ करना, बाएं हाथ के उंगलियों के नाखून को साफ करना एवं इसी प्रकार दाएं हाथ के नाखूनों को साफ करना। स्टेप 4, बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से रगड़ना एवं दाएं हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ से रगड़ना। स्टेप 5, बाएं हाथ के कलाइयों को दाएं हाथ से घुमाकर रगड़ना एवं दाएं हाथ के कलाई को बाएं हाथ से घुमाकर रगड़कर साफ करना और पानी से धोना। स्टेप 6, दोनों हाथों की हथेली एवं बैक साइड को सूखे टॉवल से पोंछना। इस प्रकार हम अपने हथेलियों की देखभाल हैंड वॉशिंग टेक्निक के 6 स्टेप को 60 सेकंड में पूरा कर सकते हैं और अपने हाथों को केयर कर सकते हैं।